नमस्कार देवियों और सज्जनों, एलन वेक रिमास्टर्ड के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे आपको पता है गैस स्टेशन पे पहुंचने वाले थे, बट दिक्कत होगी रास्ते में बहुत सारे पड़ाव से होके आगे बढ़ना था, जहाँ पे एक जगह ये लॉग का सिस्टम जो भी है ये थोड़ा सा खतरनाक एरिया है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ज़्यादा एनिमीज हैं। फिलहाल अभी तक जो भी कहानी थी आपने पहले एपिसोड में देखी है, वाइफ का गुम होना, हमारा यहाँ पे आना, किसी और इंसान का मिलना, चाबी किसी और इंसान के पास होना, किसी और इंसान से तो बहुत कुछ होने के बाद अब फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। सो या और एक चीज़ और नहीं, कुछ नहीं, चलते आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो स्क्रिप्ट था जितना हमने उठाया अभी तक, इसको बाद में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? जब सारे मिस इकट्ठे हो गए तो मे भी कुछ मिसिंग भी है, तो शायद पूरी तरह समझ में ना आए, तो अभी मैं इसको होल्ड पे डाल रहा हूँ, ठीक है? चलो। इस जगह को देख के लग रहा है कि यहाँ फाइट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। यहाँ पे मेरे पास बुलेट्स अनलिमिटेड मिल जाएंगी। ओके, ये कैसी लाइट है? अच्छा, फ्लैश लाइट। Reload boy, faster. उसको पास आने दो, पास आने दो, पास आने दो। नॉर्डिक वॉकिंग शॉर्ट गिन होता थोड़ा जल्दी हो जाता, बट Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive. एक बात वैसे बोलना है, देखो गेम की साउंड ऑलरेडी बहुत कम है यार, ठीक है? मैंने ऑलरेडी बढ़ा रखा है फुल पे इसको, ऑडियो फुल पे है सबका, ठीक है? म्यूजिक वॉल्यूम फुल है, स्पीच वॉल्यूम जो आप सुन रहे हो फुल है। ये वॉल्यूम इसकी छोड़ दो, ये तो मैंने ये जो बीच में जब हो कर रहा है उसकी कम कम कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको जो कम लग रहा है वो इसका लग रहा है। स्पीच जो बोल रहा है ये फुल पे है, बावजूद इसके मैं उसके बाद भी जब मैं वीडियो एक्सपोर्ट करने से पहले ही बढ़ाता हूँ इसको, फिर भी बहुत ज़्यादा डाउन है ये। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे क्या करूँ मैं। म्यूजिक मैंने फुल कर रखा है, स्पीच फुल कर रखा है, इफेक्ट जहाँ मुझे कम कर रहा है, क्योंकि जब वो सिनेमेटिक व्यू आता है तो बहुत ज़्यादा हुआ होता है, मैं कुछ नहीं बोल पाता उसमें। बट ये फुल है यार, उसके बाद भी कम है। सो थोड़ा सा आप आई डोंट नो, समझ के खेलना, ठीक है? जहाँ आपको लगे तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से प्लीज़ कर लेना। बाकी मैं देखता हूँ कुछ हो पाए तो मैं एडजस्ट करता हूँ। अभी देखो बिल्कुल शांत माहौल है, यहाँ पे कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जैसे जब हल्ला होता है तो फिर वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यहाँ से बाहर नहीं,
एक मिनट ओपन व्हाट अच्छा एक बार देख रहे थे कोई सीक्रेट पाथ ना हो यहाँ पे आइटम्स के लिए तो वैसे आइटम मेरे पास है बहुत हाँ शॉटगन का थोड़ी कम पहुंच गया फाइनली गैसोलीन यही है वो जगह I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting, at least for a moment. The sane world reasserted itself. जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ चेक पॉइंट है मुझे ध्यान रखना होगा अगर गेम एंड करना है तो उसी लाइट के पास करना होगा थोड़ा पहले से स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसको वापस खेलना पड़ता है वहाँ तक The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. I heard them before I saw them. ये वही होता है क्या जो हम अभी तक At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't एक मिनट क्या लिखा है With it I could save myself I could save Alice इसकी हेल्प से हम खुद को और एलिस दोनों को बचा पाएंगे ओके फिलहाल ऐसा कोई अता पता नहीं है और मैं एक चीज समझ में नहीं आया कि यार वो थोड़ा सा भी डाउट पे हूं मैं The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. मैं यही बोलने वाला था कि अब उस टाइम में जब घर में थे और जैसे ही आँख खोली पानी में जाने के बाद तो हम कहीं और यानी कि उसके बाद उसके बीच में पूरा एक सप्ताह बीत चुका है ये यार ये तो फिर एक सप्ताह थे कहाँ हम और फिर एलिस पता नहीं कहाँ होगी I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. ये फाइट ज्यादा लग रही है मुझे All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? ये बहुत कंफ्यूजिंग है बहुत सारे थ्योरीज ये कहती हैं कि सब कुछ एक बस दिमाग में चल रहा है एलन के दिमाग में कुछ ऐसा रियल नहीं है कुछ कहती हैं कि ये किसी और डायमेंशन में पहुंच चुका बहुत कुछ है लोग अंदाजा लगाते रह जाते हैं ये एनुअल डियर फेस्ट ये वही जब यहाँ पे नहीं पहली बार पहुंचे थे तो हमें एलिस ने बोला था कि खड़े होके पोज दो तो हम एक अंकल के पास खड़े थे उन्होंने फिर बताया कि बहुत अच्छे टाइम पे आए हो बिकॉज एक डियर फेस्ट होने वाला है ये इसी के बारे में सारी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ लिखा हुआ है Bright Falls Sheriff Station. पुलिस Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen, We'll figure this out.
Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? Stucky. I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. को डाउट हो रहा है क्या हमारे? अच्छा हम वहां पे आए जहां पे बोल रहे थे कि हमारा वो रूम, हमारा वो घर था, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ओह शिट, एक पूरा आइलैंड था वहां पे बॉय। ये Previously on Alan Wake. वाओ ये अच्छा है। To Bright Falls with my wife Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. रिकैप देख लो जिन्होंने नहीं देखा है। Damn it, Alice! Now she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Episode 2 taken. एक छोटा सा पॉज ले सकता हूँ यहाँ पे? ओके, लियाम नीसन की एक मूवी है टेकन, TAKEN, टेकन गेम वाला टेकन नहीं, ठीक है, TAKEN, टेकन 1, 2, 3 नहीं देखे हो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। और कोशिश करना कि वो मूवी आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही देखो। You're gonna love that voice. आप मैं लियाम नीसन की बात कर रहा हूँ। He's amazing. So yeah, okay, continue करते हैं। Honey, I'm home. Okay. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 साल पहले का है जब हम और एलिस तो उस आइलैंड से दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं था ना, हम कोई घूमने गए थे, तब का है ये। और यहाँ भी कुछ ऐसा होगा जो शायद आगे हमारी कहानी से जुड़ेगा। और ये वो किताब है जो उस वक्त हमारी कार में थी ना। एक मिनट, ये कोई और बुक है शायद, लेकिन एलन वेक की है, बट वो उसका फ्रंट पेज कुछ और था। मे भी 3 सालों में एलन ने कोई नई किताब लिखी होगी। वेट, देख लेते ना क्या है इधर। अमेजिंग यार, कितना भी अच्छा शावर क्यों ना हो, कितना भी आलीशान क्यों ना, जो मज़ा बाल्टी में पानी डाल के मग्गे सिर पे डाल के नहाने में है ना, शावर में नहीं आता हूँ। पता नहीं क्यों, मैं भी स्टार्टिंग से नहाए शायद इसलिए या जो भी हो, बट वो अलग ही होता है। और जब गाँव में जब खेत में जब सिंचाई होती है तो वहाँ पे नहीं, जब टेबल चलता, क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी उसको बोलते हैं, हमारे तो उसको फिर जो पानी वहाँ से निकलता है उसमें छप छप करके मज़ा आता है नहाने में ना, वो हो। खैर, मैं कॉफ़ी बनाना था ना मुझे। ओके, Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. कितनी मैंने सोचा है कभी किसी रोज़ जब ऐसे मतलब होगा अपना घर, तो मैं ये चीज़ ज़रूर रखूँगा अपने यहाँ। बुक्स का एक अच्छा सा कलेक्शन होना चाहिए, मतलब रखने की जगह। बुक्स तो हैं काफ़ी सारी, बट वो रखने की जगह नहीं है इस तरह से। बड़ा अच्छा लगता है। सोचो कितना अच्छा माहौल है ये कि आप आराम से जो चाहो बुक लेकर आराम से बैठ के यहाँ पढ़ सकते हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। ये माहौल बहुत ही अमेजिंग है। बुक से दोस्ती करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। पहले मुझे लगता था, बहुत पहले की बात है, कि बुक्स पढ़ने में नींद आती है। बाद में तो जब इनसे थोड़ी सी दोस्ती हुई, इनको जाना, तो समझ में आया कि यार जो इनसे आपको मिलेगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, जो ज्ञान ये देंगे आपको। बहुत कुछ सीखने जानने को मिलता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा धीरे धीरे बोलने की, ताकि बहुत लाउड ना हो जाए और आप भी आराम सुन पाओ। ओके, एली से बात करते हैं। I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly.
On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता अभी जो एलिस ने बोला वो आप खुद समझ जाना ठीक है फिलहाल जो एलिस ने बोला वो जाके चेक करके आता हूँ मैं थोड़ा सा नॉटी नॉटी था ये वो बुक थी बाबा बोले रहा था कि आपको बुक तो एलन की लिखी हुई बट कोई और था उसका कवर पेज ये कवर पेज है जो एलिस ने बनाया था हमारे लिए These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Oh. Alan? डर रही है वो Alan, please check the fuse box. अच्छा I'm उसको right here. फोबी I'm on it, honey. उसको Please hurry. उसको फोबिया है ना अंधेरे से डर लगता है Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. ओह ये तो सच भी हो गया है बाद में Alan. Maybe it'll help you, too. लाइट मॉन्स्टर्स को Yeah, भगाते nice हैं story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? ये बातें कोई बिलीव नहीं करेगा अगर मैं बताया भी I'm तो okay. हमने My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. कांप क्यों रहा है ऐसा I लग रहा है don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कांप सा रहा है मतलब लैग नहीं कर रहा बट क्या हो रहा है ये Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. जो यहाँ पे I'll let you लोग get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. गांव Doc में यार Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. टाउन में या गांव में जब छोटे मोटे क्लिनिक में आप जाते हो मान लो और वहाँ पे आपको दिक्कत ज़्यादा है और मिसिंग तो डॉक्टर आपको रिफर करते हैं ना किसी बड़े हॉस्पिटल में तो इसीलिए हमने यहाँ Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. हमने जानबूझ के सच नहीं बोला वहाँ पे अगर सच बोलते तो फिर वो हमें चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजते किसी दूसरी जगह पे और फिर अब हम यहाँ से चले जाते बिना एलिस के तो और हम कर नहीं सकते हम साथ आए थे एलिस के तो साथ लेके जाएंगे इसलिए हम डॉक्टर कुछ बताया नहीं हमने बोला अब ठीक है आगे देखते हैं Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? अरे How यार did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. unknown call Hello? Alan, please help. Alice Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here.
After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Mr. Wake, can I help you with anything? Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. अगर तुम अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहते हो तो वही करो जो मैंने बोला, वरना कुत्तों के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारी वाइफ को खिला दूंगा, ऐसा कुछ बोला उसने। और बैक में जाओ, तुम्हें कुछ मिलेगा जो तुम्हें कन्विंस करे। किस चीज के लिए बोला इसने कि हमारी वाइफ की उसके पास, इसके लिए? खैर देखते हैं। The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left." Wait. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. मतलब एलिस उसके पास है, सही बोल रही है। Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. इसके अगर एलिस का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पड़ा, इसका मतलब सच बोल रहा है, एलिस उसके साथ ही होगी तभी बात भी करा पाया। बट वो जिससे बात करा वो एलिस ही थी या उसकी प्री रिकॉर्डिंग वॉइस थी, ये तो मैं क्लियर नहीं है ना, ये भी हो सकता है। खैर हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। खैर मिलना, अब ऑब्वियसली कोई क्लू हमारे पास है नहीं तो उससे मिलना तो उसी से पड़ेगा ना, और इसके बारे में हम पुलिस को नहीं बता सकते। हमें उनसे कुछ इस तरह से बात करनी होगी, हमें वहाँ से जाने दें। A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ या स्टोरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं एलिस को बचा लूंगा। नाम नहीं लिया बट बहुत सारी चीजें इसमें है यार, देखते हैं। देखो कहानी बहुत सीधी है बट उलझी हुई है। ये क्या कहूँ मैं, एग्जामिन द सर्विस स्टेशन। Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. ये चीज बहुत अच्छी है कि एक चैप्टर के बाद दूसरा जब स्टार्ट हो रहा है तो पूरा एक रिकैप दिखा रहे हैं कि पहले क्या हुआ था। I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too.
Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later. आधी रात को किडनैपर ने मिलने के लिए बुलाया हुआ है एल्डरवुड में कहीं पे कोई लवर्स पीक है वहाँ पे और हमें वहीं जाके मिलना। What an airhead. Jeez, Mr. Takes a तब तक रुकने के लिए कोई जगह तो चाहिए होगी ना हमें। This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. Wait here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? कोई भी क्यों मानेगा इस बात पे यार कि हम एक हफ्ते पहले वहाँ पे थे, एक हफ्ते। Are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and everything's understand just what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, Wait here. You're buying yourself a ticket to the funny farm. ये पैसे देख रहा है उस पे, उसको दिख रही है एक अच्छी सी कहानी और वो उसको सेल करना चाहता है, बट इसको समझ नहीं आ रहा है कि एलिस इस चक्कर में गायब हो चुकी है ना। ये भी बिलीव नहीं कर रहा इस बात पे शायद। I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. ठीक है। Seriously, Al, you आ can't जब just go पगले आ जा, and मैं meet चाहता a हूँ तुम kidnapper. खड़े खड़े आओ, चल के बात Situations always चलो end आओ with तो disaster. चलते हैं लवर्स पीक ना, देखते हैं वहाँ क्या है। आधी रात को आधी रात को लवर्स पीक किडनैपर से मिलने। Crazy talk, Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. But you're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here. देखो If एक I'm बात- not back by morning, call the cavalry. अभी कभी लाइफ ऐसा कुछ हो ना तो कभी भी ये चीजें मत करना, ठीक है कि Just be careful with the natives, Al. मैं बस बता रहा हूँ These कि yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. कि पुलिस से बात ना करने की, प्रोफेशनल्स जो काम कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कैसे हैंडल करना है। मूवीज़ पे यकीन करना छोड़ो, मूवीज़ में दिखाई हुई 99% चीज़ें झूठ होती हैं, फेक होती हैं, ठीक है। आप वो आपको वही दिखाना चाहते हैं जो देख के आपको मज़ा आया, थ्रिल आपकी बॉडी में आए, बट सच्चाई ये नहीं होती है, ठीक है। अपनी पुलिस पे यकीन करना शुरू करो, और अगर ऐसा कुछ कभी हुआ, कभी भी ऐसा कुछ हुआ, मैं चाहता नहीं, मैं बस बात कर रहा हूँ, तो पुलिस के पास जाने से डरना मत। आप अकेले हैंडल कुछ नहीं कर पाओगे, उल्टा बहुत कुछ नुकसान खो दोगे, नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा मत करना। एक बात याद रखना, बहुत बड़े बड़े मुजरिम आते हैं, बहुत आए हैं, आएंगे, जो खुद को कहते हैं ना कि मैं कानून का बाप हूँ, कह के बहुत घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं, बट अंत में कानून सबका बाप निकलता है, अच्छे अच्छे को ले लेता है बढ़िया से, ठीक है। ठोक दिया जाते हैं, एनकाउंटर मार दिया जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आप समझोगे बाद में धीरे धीरे। एक मिनट, लाइट क्यों बंद कर दिया मैंने। बट मूवीज़ पे यकीन मत करना, मैं बस ये कह रहा हूँ, और ट्रस्ट करना सीखो थोड़ा सा, ठीक। बुरे लोग, बुरे व्यक्ति, भ्रष्ट हर जगह है। दुनिया में ऐसी कोई फील्ड बता दो जहाँ पे नहीं है, आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। कोई भी ऐसा नहीं जहाँ पे भ्रष्ट इंसान आपको नहीं मिलेगी, आप किसी की नीयत को नहीं जानते, हर जगह मिल जाएंगे, बट वो चंद लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को उसको ख़राब मान लेना, ये गलत है, ये कभी मत करना, ठीक है। मैं कहाँ पे था? हाँ, ओके, बैटरीज। ये मुझे लग रहा है थर्मस एक कलेक्टिबल आइटम की तरह है, इसका कोई काम नहीं है कॉफ़ी थर्मस, राइट? बिकॉज स्टार्टिंग से अभी तक कुछ ऐसा होता है, हेल्थ का तो दिख गया होता है, हेल्थ अभी तक बस ऐसे ही बढ़े जब लाइट में आते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं है। खैर, मैं वहाँ जा रहा हूँ ना, लवर्स पीक। कूद के तो नहीं जाऊँगा ऑब्वियसली। उसने बोला कि सीधा रास्ता है, पहुँच जाओगे जाते जाओ, और जगह बहुत प्यारी, आपको देखती समझ में आ जाएगी।
मुझे लगा था लाइट में चेक पॉइंट आता है, ऐसा नहीं है, कहीं भी आ सकता है। गाड़ी नहीं चलाने को मिलेगा क्या? ओह! Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. ओके, वो चला लेता ना पगले, में बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। फार क्राई 6 देखे तो ना। I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done. देखो, but I मैंने was still बोला angry ना, with Barry for trying to talk me out of it. नहीं करना These चाहिए people ऐसे। had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. मैं कह रहा हूँ यार कि हमारे पास जो गन थी, जो भी चीजें थी, तो गायब हो गई, कुछ है नहीं हमारे पास अब इस बार तो। ये तो बात अलग है, मतलब हर एक चैप्टर में अलग अलग गन्स मिलेंगी। ओके, गन्स अलग तो नहीं, बट हाँ उनको खोजना पड़ेगा वापस से इस वाले में ना। क्या यार, ऐसे माहौल में तो एक पंछी भी डरा दे इंसान को। Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. कुछ गड़बड़ है। ये चलने की आवाज की, अच्छा नहीं मेरी ही है। ऑलराइट, लेट्स गो। सामने लाइट दिखी थी मुझे, मैं दूसरे रास्ते से आ जा रहा हूँ क्या शायद? एक सेकंड प्लीज यार, रुक जरा, मैं कंफ्यूज हूँ, शायद मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ क्या? मैंने लाइट देखी थी कहीं पे यार, कैसे? मैं यहाँ से आया, मैं आगे बढ़ा, मैं वहां से मैंने उड़ते हुए चिड़िया को देखा, बट ये सिर्फ लाइट थी, अब वो गायब हो गई। खैर कोई बात नहीं, वो तो रास्ता सही है ना बस। लवर्स पीक, एल्डरवुड नेचर ट्रेल, मूनशाइन केव। Lights? Okay, no problem. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty? Damn. Rusty, hang on! Oh, I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! Help me! Relax, man. Can you hear me? Never speak. Anyone? Please help! Hello? Back here. I'm back here. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. What
Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. मुझे लाइट ऑन करनी होगी ना, जो भी है दोबारा ना आ जाए। अगर ये हाल कर सकता तो मार भी सकता। जो उस रूम की हालत हुई थी वो भी ऐसी कुछ हुई थी, मतलब वहां भी वही चीज था जो यहाँ पे था। गेट द लाइट्स ऑन। The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. वही कुल्हाड़ी है जो Rusty! Run, man! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Just need hunting licenses. ये क्या था? Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. कोई उसको उठा के ले गया, उसे साइज देखो कितना खतरनाक है, खल्क जैसा। हमारा पाल पाला क्या बॉस से पढ़ने वाला है कोई, पता नहीं, बट स्ट्रेंज। Don't feed the animals. Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park fishing license. Obey! Rusty? Hey, man. At all times. Rusty? Rusty, no! Two bears and wolves never approached any other closer than... at all times. Never leave your Head unattended. It is against from the park. अरे दा This includes even you, me. Yes, boys. Under a thin layer of skin. ये रहा, बढ़िया। अरे फिर से नहीं यार, दो है। नाइस वन। एक मिनट पहले बुलेट फुल करे फिर निकलेंगे यहाँ से। ओके यहाँ से ओपन है। बड़ा रहस्य उलझाता है, उलझ जा रहा है और कि क्या होगा वहां पे। ऑलराइट गाइस, सो आज का एपिसोड समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। जानिए क्या होगा लवर्स पार्क में, क्या हमारे से ढूंढ पाएंगे, कौन है किडनैपर और क्या चाहता है। हम सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। आपको सो मच, बाय 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 टाटा।
अपना ख्याल रखो, मिलता हूँ जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।